हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो होपफुली आपने अब तक जितने भी जो एंजाइम से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज किए होंगे और एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस की होगी। नहीं की है तो डेफिनेटली आज एंजाइम का मेजर जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो कल तक हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट the basic enzyme kinetics, especially about the Michaelis-Menten equation। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर वर थ्री डिफरेंट वेज। वन वाज लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, फिर हमने बात की थी हेन्स-वुल्फ प्लॉट के बारे में, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था ईडी-हॉप्सी प्लॉट के बारे में। Although there are three different plots they are available, but out of these three जो सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है that is Lineweaver-Burke plot, so that's why most of the questions they are being asked from Lineweaver-Burke plot. Lineweaver-Burke plot is a simple reciprocal of the double reciprocal of Michaelis-Menten equation। आज जो हमारा ये सेशन है माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम बेसिकली एंजाइम इनिबिशन के बारे में पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से डिफरेंट इनिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, एंजाइम को काम करने से रोकते हैं, या इनिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी कंपैरेटिवली लेसर हो। सो मूविंग टू द टॉपिक एंजाइम इनिबिशन। बेसिकली जो एंजाइम इनिबिटर्स हैं उनको ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनिबिटर्स, दीज कुड बी विच इनिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, दे कुड बी divided into two broad categories, that is inhibitors could be irreversible or inhibitors could be reversible in nature। ऐसे सभी इनिबिटर्स फ्रेंड्स जो एंजाइम के साथ आकर एक्टिव साइट या किसी और जगह पर बाइंड होते हो, लेकिन वह भी कोवलेंटली, सच दैट नाउ दे डू नॉट डिसोशिएट फ्रॉम द एंजाइम, जिसकी वजह से एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। सो some kind of enzyme is there, and let's say this is some kind of a inhibitor is there, and inhibitor binds to the enzyme in a fashion that now the enzyme become permanently inactive. So there is a permanent loss in function, that is now the inhibitor cannot be removed। अगर वापस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रिज्यूम करनी है, कंटिन्यूस करवानी हो, तो यू हैव टू कैरी आउट अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर अ न्यू एंजाइम। नया एंजाइम बनेगा, और अगर इनहिबिटर अब नहीं है तो फिर वह काम कर सकता है। उसके कॉन्ट्रास्ट देयर आर सम इनहिबिटर्स विच आर लाइक अ सबस्ट्रेट, इन अ सेंस कि जैसे इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बढ़े, वह एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, और अगर इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए, इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, अगेन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कुड कन्वर्ट इनटू अ फ्री एंजाइम एंड अ फ्री इनहिबिटर। द ब्रॉड डिफरेंस जो दिमाग में चाहिए, सबसे मेजर डिफरेंस क्या था? सबसे मेजर डिफरेंस कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स दे बाइंड कोवलेंटली, जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और एंजाइम के बीच में देयर इज नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस। यहां पर नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस होते हैं। दैट इज एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट परमानेंटली, यू कैन से,
inhibited. Okay, so there is a kind of non-covalent interactions. Then सबसे पहले we are going to discuss the irreversible inhibitors. Irreversible inhibitors which binds to the enzyme covalently. These irreversible inhibitors could be further divided into various categories that how they interact. ये इनहिबिटर्स कैसे होते हैं, एंजाइम के साथ किस तरीके से आकर बाइंड होते हैं, उसके बेसिस पर इनको कई सारी टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। बस एक बात कॉमन है कि ये इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ कोवलेंटली आकर बाइंड होते हैं और एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी irreversible inhibitor की, that is group specific covalent modifying agents. मीन्स ये इनहिबिटर्स कुछ एक पर्टिकुलर तरीके का ग्रुप एक्टिव साइट पे दिखाई दे, जैसे सीरीन की, ये रहा सीरीन, उसके साथ कोवलेंटली जाकर बाइंड हो जाए। एक्टिव साइट में सिस्टीन हो तो देयर आर सम काइंड ऑफ इनहिबिटर्स जो परमानेंटली यहां पर आकर बाइंड हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्रुप स्पेसिफिक covalent modifying agents. So a particular group should be accessible, available, then only these inhibitors, they will affect the activity of enzyme. As an example, कि ऐसे सारे एंजाइम्स जिनकी एक्टिव साइट में सीरीन की आर चेन दिखाई दे रही हो, एंजाइम्स जिनकी एक्टिव साइट में इस तरीके से CH2OH सीरीन की आर चेन दिखाई दे रही हो, ये दिखाई देते ही there are various inhibitors which get covalently bind to this. Such group specific inhibitors include diisopropyl fluorophosphate, DIFP. नोट डाउन करें इसको, सीरीन अगर प्रेजेंट है, इस ग्रुप स्पेसिफिक इनहिबिटर है, दैट इज diisopropyl fluorophosphate. If in an active site serine is there, it could be inhibited by another compound referred to as phenyl methyl sulfonyl fluoride, that is PMSF, DIFP and PMSF. उसी तरीके से अगर एंजाइम के एक्टिव साइट में सिस्टीन हो तो भी देयर आर सम केमिकल्स जो कि कोवलेंटली आकर बाइंड हो सकते हैं। इफ सिस्टीन इज देयर, देन ऑल्सो देयर आर सम इनहिबिटर्स जो एंजाइम में इस ग्रुप के साथ आकर बाइंड होते हैं और एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट कर सकते हैं। इनहिबिटर्स इंक्लूड आयोडोएसीटेट, एक्टिव साइट में सिस्टीन हो, कोवलेंटली जाकर बाइंड हो जाता है। Iodoacetamide, that also targets cysteine. N-ethylmelamide, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है। N-methylmelamide also inhibit the cysteine, or it binds covalently to the cysteine and inhibit the enzymes जिनके अंदर cysteine present हो। कई सारे heavy metals like silver, mercury, lead के divalent ions, mercury के, lead के या silver ions, they also inhibit those enzymes which in their active site they have you can say cysteine. So this is the category of those inhibitors which are group specific. They recognize a particular type of group. Then the second category of the inhibitors which are the affinity labels, that is such kind of inhibitors, they will bind to an enzyme by, that is enzyme will able to recognize these inhibitors due to a multiple non-covalent interactions. Enzyme will have an affinity for such kind of inhibitors, but once
an inhibitor has been recognized by an enzyme, it is taken into the active site. Covalently, these inhibitors bind to the enzyme. So, enzyme is having an affinity for such inhibitors. They interact with an enzyme and become permanent resident of an active site. उन्हें क्या कहा जाएगा? एफिनिटी लेबल. एफिनिटी लेबल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जा सकता है, जो नोट डाउन करें आप. टॉसाइल फिनाइल एलेनाइल क्लोरो मिथाइल कीटोन, दैट इज TPCK. टॉसाइल फिनाइल एलाइल टॉसाइल फिनाइल एलेनाइल क्लोरोमिथाइल कीटोन. बेसिकली ये कीमोट्रिप्सिन एंजाइम की एक्टिव साइट में जहां सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वहां पर हिस्टिडीन के साथ कोवलेंटली बाइंड हो जाता है. यानी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में इंटरेक्ट तो सबस्ट्रेट को करना चाहिए, पर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने की बजाय कीमोट्रिप्सिन TPCK को रिकॉग्नाइज कर लेता है. कीमोट्रिप्सिन एक सीरीन प्रोटीएस है, और ध्यान रखें कि ये इनहिबिटर सीरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है. किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? हिस्टिडीन के साथ. तो जो कैटालिटिक ट्रायड होती है, एस्पार्टिक एसिड भी होता है, हिस्टिडीन भी होता है और सीरीन भी होता है, उसमें से किसके ऊपर जाकर कोवलेंटली बाइंड हो रहा है? हिस्टिडीन के ऊपर. तो इन्हें कहा गया एफिनिटी लेबल. Third category of inhibitors are transition state analog. What we mean by transition state analog? Let's say this is some kind of, you can say, a substrate. ये कोई एक let's say substrate है. इसको हम और simplified form में draw कर लेते हैं. Let's say this is some kind of substrate. And let's say this is a transition state of a substrate. Let's try to draw that this is a some kind of transition state of the substrate. Transition state of the substrate is most active state. This is the transition state of substrate. And enzymes, they recognize substrate and stabilize it in a transition state. So here now, the inhibitors, instead of resembling with a ground state of substrate, they are resembling with a transition state of a substrate. The result of this would be that now the enzyme will more readily recognize the transition state of substrate, even more readily than its actual substrate. एंजाइम उसके सबस्ट्रेट की बजाय सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट की तरह दिखने वाले मॉलिक्यूल को और ज्यादा एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज करेगा. और एक बार रिकॉग्नाइज करने की गलती कर दी तो अब ये ट्रांस स्टेट एनालॉग एंजाइम की एक्टिव साइट में कोवलेंटली आकर बाइंड हो जाएगा. इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें तो वी कैन अगेन नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट पायरोल 2 कार्बोक्सिलेज, pyrrole 2 carboxylase, it resembles with a transition state of a proline. ये प्रोलीन की ट्रांजिशन स्टेट से रिजेबल करता है एंजाइम. और एंजाइम जो धोखा खा जाता है या जो परमानेंटली इनहिबिट हो जाता है, उस एंजाइम का नाम है प्रोलीन रेसिमेस. प्रोलीन रेसिमेस, जिसको प्रोलीन को पहचानना था, प्रोलीन को पहचानने की बजाय वह रिकॉग्नाइज कर लेता है पायरोल 2 कार्बोक्सिलेज को, क्योंकि पायरोल 2 कार्बोक्सिलेज का स्ट्रक्चर प्रोलीन की ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा रिजेंबल करता है. सच कंपाउंड्स आर रेफर्ड टू एज ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स. देन अनदर कैटेगरी ऑफ
the irreversible inhibitors are referred to as suicidal inhibitors or also referred to as K-cat inhibitors. Why they have been named as suicidal inhibitors? Because they modify inhibitors like substrate. जैसे सबस्ट्रेट को मॉडिफाई करते हैं ऐसे ही इनहिबिटर को मॉडिफाई करते हैं. अब तक इनहिबिटर को मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहे थे, पर यहां पर इनहिबिटर को मॉडिफाई कर रहा है एंजाइम. एंजाइम सिर्फ पहचान ही नहीं रहा है, पहचानने के बाद इनहिबिटर को केमिकली मॉडिफाई कर रहा है. और ये गलती भारी पड़ती है. मॉडिफाइड inhibitor do not leave active site. जो मॉडिफाइड इनहिबिटर है वह अब एक्टिव साइट को रिलीज नहीं करता. ओके, देन मूविंग फर्दर, अगर वह एक्टिव साइट को रिलीज नहीं करेगा या एक्टिव साइट से रिलीज नहीं होगा तो एंजाइम वापस परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाएगा. बात वापस हुई होगी. सो व्हाट हियर इज बीइंग डन इज, जैसे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट होता है, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. देन दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एन एंजाइम bound with a product, and then there is a free enzyme and there is a free product. Enzyme could again participate in a next reaction. But dear friends, if it is a case of suicidal inhibitor, what happens is that enzyme binds with an inhibitor, there is a formation of a EI complex. Further, EI complex could be converted to EIP, means the inhibitor is modified, but now this is not possible. Free enzyme is not possible and this product is not possible. Inhibitor will not be released because this modified inhibitor, it become permanently bound to the active site of enzyme. As an example, we can consider a case of allopurinol which inhibit the enzyme xanthine oxidase. Normal function of a xanthine oxidase is that xanthine is converted into uric acid. This is the normal function of an enzyme xanthine oxidase. So xanthine is converted to uric acid and uric acid is released, a product is released from the enzyme, enzyme is free, so again it can interact with a xanthine. But if a inhibitor is there referred to as allopurinol, the allopurinol could also be oxidized by a xanthine oxidase into a oxypurinol, and once it has been converted to an oxypurinol do not leave active site, it do not leave active site, covalently bind हो जाती. So this modified inhibitor, now it is not leaving the active site. So ऐसे inhibitor को हम suicidal inhibitors कहेंगे. Such inhibitors would be referred to as suicidal inhibitors. Okay, इससे तो बढ़िया ये होता कि वह एंजाइम सबस्ट्रेट को या जो एलोप्यूरिनॉल है उसको मॉडिफाई ही नहीं करता. अगर मॉडिफाई नहीं करता तो फिर कोई प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलती. गॉट दिस? आगे बात करें. सो दीज वर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स. तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ग्रुप स्पेसिफिक हो सकते हैं, एफिनिटी लेबल हो सकते हैं, उसके साथ साथ वो ट्रांजिशन स्टेट से रिजेंबल कर सकते हैं, वह सुसाइडल सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं. एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर बाइंड हुए और वापस वहां से रिलीज ही नहीं हुए. दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स.
Now moving to a second category of inhibitor, that is referred to as reversible inhibitors. Reversible inhibitors, they are somewhat like सबस्ट्रेट इन अ सेंस, जैसे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ज्यादा हो तो इंटरेक्ट करता है, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वापस सबस्ट्रेट डिसोशिएट हो जाता है, बिकॉज इंटरेक्शन इज नॉन कोवलेंट, एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन दे आर रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, सिंस दे बाइंड एंजाइम्स थ्रू non-covalent interactions. That is, there would be formation of some kind of E plus I complex, and EI complex could convert back into EI. Thus, the process is, if inhibitor concentration is reduced. And how we will reduce the inhibitor concentration? The simplest way of reducing the inhibitor concentration is by dilution. Dilution करें, inhibitor concentration कम हो जाएगी. If inhibitor concentration is reduced, process can be reversed. आराम से प्रोसेस, यानी इनहिबिटर कंसंट्रेशन कम करो तो जो EI कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो वापस E प्लस I में डिसोशिएट हो जाएगा. इसके अलावा कुछ और तरीके भी हो सकते हैं चीजों को रिवर्स करने के लिए, बट वन ऑफ द वे टू रिवर्स दिस इज बाय डाइल्यूशन, दैट इज बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर और यूजिंग दिस इनहिबिटर समवेयर एल्स. कुल मिलाकर इनहिबिटर की इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वह कम हो जाएगी. These reversible inhibitors could be of 4 types. That could be competitive, non-competitive, mixed, and uncompetitive type of inhibition. In case of competitive inhibition, what happens is that if no inhibitor is there, under such scenario, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर इंटरेक्ट करता है, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, देन दिस ES कॉम्प्लेक्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. इफ समहाउ you allow all the total enzymes to move in a direction of K2, सारे के सारे K2 वाली डायरेक्शन में एंजाइम्स जा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी विल सी दैट सम Vmax हैज बीन अचीव्ड. बट इफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज देयर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैज अ सिमिलर एफिनिटी फॉर एन एंजाइम, और एंजाइम जिस तरीके से सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को भी रिकॉग्नाइज करता है. So what we can say that in this case the substrate and inhibitor have similar molecular compatibility. दोनों की molecular compatibility सेम है for enzyme. Thus substrate and inhibitor compete फॉर एंजाइम. दोनों के दोनों एंजाइम के लिए कंपीट करते हैं. सबस्ट्रेट चाहता है कि वह इंटरेक्ट करे, इनहिबिटर चाहता है कि वह इंटरेक्ट करे.
Now, whether a substrate will bind or a inhibitor will bind, that depends upon the relative concentration of substrate and a competitive inhibitor. If a inhibitor is there, under such scenario, if a inhibitor is there, उस सिनेरियो में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होने की बजाय इनहिबिटर भी आकर बाइंड हो सकता है, और ऐसा हुआ तो देयर वुड बी एन फॉर्मेशन ऑफ EI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. सो आइदर देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स और देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ EI कॉम्प्लेक्स. ESI कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता क्योंकि सबस्ट्रेट को और इनहिबिटर को दोनों को एक ही जगह पर आकर बाइंड होना है. व्हाट वी कैन से दैट there is what we can say is that either, we can say only binary complex formation, that is EI complex formation is possible. सिर्फ EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, ESI नहीं बन सकता. कितना EI बनेगा, कितना ES बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की रिलेटिव कंसंट्रेशन कितनी. सबस्ट्रेट ज्यादा तो ES कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा, इनहिबिटर ज्यादा तो EI कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा. इफ वी विश दैट EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रेज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इतनी ज्यादा बढ़ाएं कि इधर की तरफ जाने का एंजाइम को मौका ही ना मिले. टोटल एंजाइम गेट कन्वर्ट टू एन ETS, एंड इफ टोटल एंजाइम कन्वर्ट टू ETS, ऑब्वियसली फॉर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड बी टू हाई, तो ES कॉम्प्लेक्स वापस E+S में कन्वर्ट होने की बजाय वह किधर की तरफ चला जाएगा? E+P वाली डायरेक्शन में, और सारे के सारे एंजाइम इस डायरेक्शन में अगर जाने लग जाए तो वी से दैट Vmax हैज बीन अटेन्ड. So here what we can say is inhibition, competitive inhibition, can be reversed by increasing concentration of सबस्ट्रेट. सो हमने दो तरीके पढ़ लिए. एक हमने कहा कि या तो आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को कम कर दो, और अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को कम ना किया जाए तो रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर एक और तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज कि अगर उस सेकंड वे क्या है, दैट इज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट so that competition could be favored in the direction of the substrate. More and more ES complex would be formed. The amount of EI complex which would be formed would be very less. Then, since moving to a kinetic parameter, that what is the effect on Vmax and what is the effect on Km, moving to that kinetic parameters के बारे में एक बार बात करते हैं. We have discussed that if you increase the substrate concentration too high, then सारे सारे एंजाइम ETS कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ETS कॉम्प्लेक्स को E+P वाली डायरेक्शन में भेजा जा सकता है. So what we want to say that Vmax remain unchanged. And why it remain unchanged? Because we can attain the same Vmax.
पहले भी Vmax को अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, अब और ज्यादा चाहिए, पर अभी भी अगर पहले Vmax अटेन की जा सकती थी कि टोटल एंजाइम प्रोडक्ट बनाए, तो अभी भी टोटल एंजाइम को प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, बट फॉर दिस यू विल हैव टू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और Vmax वैसे भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम कह रहे हैं कि if same Vmax can be attained, it can be achieved. So here we say yes, same can be attained. So Vmax remain unchanged. That is, we can attain the same maximal value. जितनी मैक्सिमल वैल्यू पहले हम अटेन कर रहे थे एंजाइम की, अब उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू अब भी अटेन कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ज्यादा लेनी पड़ेगी। और अगर Vmax को अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लेनी पड़ रही, तो ऑब्वियसली 50% Vmax के लिए भी हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी, और 50% वेलोसिटी को अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए उसे हम Km कहते हैं। इसका मतलब Km विल increase. Km get increase. Km increase means affinity decreased. So you can note down this simple point that competitive inhibitor condition में Vmax में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि टोटल एंजाइम्स Vmax डिपेंड किसके ऊपर करता है? Vmax डिपेंड अपॉन K cat ET, इसके ऊपर Vmax डिपेंड करता है, ये हम कल बात कर रहे थे। क्या टोटल एंजाइम्स प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में यानी K cat वाली डायरेक्शन में भेजे जा सकते हैं? हाँ, भेजे जा सकते हैं, पर कब? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। 100% अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो 50% को भी अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होगी, और 50% वेलोसिटी को अटेन करने की जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए उसे Km कहते हैं। इसलिए हम करें Km बढ़ गया। Km बढ़ने का मतलब अब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को उतनी एफिनिटी से नहीं पहचान रहा जितना पहले पहचान रहा था, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट को ही पहचान रहा होता तो हम कहते हैं कि एफिनिटी में कोई फर्क नहीं, पर अब सबस्ट्रेट के साथ साथ किसको पहचानने लग गया है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो दीज आर द चेंजेस ऑन काइनेटिक पैरामीटर्स लाइक Vmax and Km. Then the same thing what we have studied could be graphically represented. इसको हम graphically represent कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि what would be the change in Vmax, competitive inhibition में हम कह रहे हैं तो Vmax remain unchanged, but what would be the change in Km? We will say that you will find a altered Km, and altered Km will be alpha times of, or it will increase by the factor alpha. So what is Km dash? We will say that Km dash is the altered Km in presence of competitive inhibitor. And what is alpha? Alpha is the factor by which there is increase in Km. यानी Km डबल हो गई है या ट्रिपल हो गई है या 1.5 टाइम्स हो गई है या 1.8 टाइम्स हो गई है, दैट फैक्टर इज रेफर्ड टू एज अल्फा। अब Km में कितना इंक्रीज आएगा, किस फैक्टर से इंक्रीज होगा? फैक्टर अल्फा डिपेंड्स अपॉन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज first what is the concentration of inhibitor, and second is what is an affinity of an enzyme for the inhibitor. ये दो फैक्टर्स। इनहिबिटर कंसंट्रेशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा तेजी से Km में इंक्रीज होगा।
इनिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं, इनिबिटर के लिए एफिनिटी ज्यादा है। अगर इनिबिटर के लिए एफिनिटी ज्यादा है तो यानी के आई की वैल्यू जितनी कम है उतना अल्फा ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा होने का मतलब है कि के एम में ज्यादा इंक्रीज होगा। So K, what is Ki? So we can say Ki is a dissociation constant for enzyme inhibitor complex. जितना Ki की वैल्यू कम, इसका मतलब उतना ही कम डिसोसिएशन, और कम डिसोसिएशन मींस मोर इज एफिनिटी। सो Km बढ़कर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, पर वो किस फैक्टर से बढ़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इनहिबिटर. If you try to represent it on a Michaelis-Menten equation and Lineweaver-Burke equation, the equation will get modified. Normally जो Michaelis-Menten equation होती है, that is V0 equal to Vmax S Km plus S, और इस ग्राफ के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, अगर हम एक तरफ V0 को मॉनिटर करें, एक तरफ हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रेज करते जाएं, तो व्हाट यू विल सी इज दैट इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर देयर वुड बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. इट विल रीच टू, फाइनली इट विल रीच टू अ V max वैल्यू. बट अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है, if inhibitor is present, then the observed velocity will get modified. Vmax remain unchanged, but the Km will increase by the factor alpha. If there is a change in Km, there would be change in V0 dash. So now in presence of inhibitor, you can see that the line of V0 is different from the V0 dash is different from the V0, although same Vmax कैन बी अटेन, कहीं ना कहीं पर जाकर सेम Vmax है वो अटेन की जा सकती. सो सेम Vmax इज बीइंग अटेन्ड, बट दिस इज Vmax, देन हाफ ऑफ दिस वुड बी रेफर टू एज हाफ Vmax, और हाफ Vmax के लिए सबस्ट्रेट के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए उसे Km कहा जाएगा. लेकिन इनहिबिटरी प्रेजेंस में जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए सेम 50% Vmax को अचीव करने के लिए, that is you need more substrate concentration, and now this Km would be referred to as altered Km. So Km dash is altered Km, which is alpha times of Km. इस तरीके से लिखा जा सकता है. So what we have to keep in mind that there must be no change in Vmax. The value of Km must increase if it is a competitive inhibitor. सेम थिंग कुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन. तो लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन आपको याद होगा, 1/V0 था, Km/Vmax, 1/S plus 1/Vmax. दिस इज लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन. ये लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन. इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर द इक्वेशन विल गेट modified. In presence of inhibitor, the equation will become somewhat like this. That is 1/V0 dash, यानी ऑब्जर्व वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आएगा. Km की बजाय हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ Km बाय Vmax, 1/S plus 1/Vmax. Now this is the equation for competitive inhibition, modified equation for a competitive inhibition. So स्ट्रेट लाइन में आपको पता है ये y एक्सिस है, ये m है, ये x है प्लस c है. So y नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास इस तरीके का कर्व है, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, दिस इज 1/Vmax. इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या करना है कि
स्लोप को, सिर्फ और सिर्फ स्लोप को इंक्रीज करना है, स्लोप मस्ट इंक्रीज। सी इज द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, वह सेम रखना है, सिर्फ इस पॉइंट को सेम रखना है इनवर्टेड प्रेजेंस में, और स्लोप को इंक्रीज करना है। तो ओनली वे बाय विच यू कैन इंक्रीज द स्लोप इज समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से आप स्लोप को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट पर भी आप देख सकते हैं 1/v मैक्स सेम है, और लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, इसका मतलब -1/km तो घटा है, बट km की वैल्यू है वह इंक्रीज हुई, क्योंकि रेसिप्रोकल प्लॉट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं 1/km की वैल्यू तो इंक्रीज हुई है, बट km की वैल्यू एक्चुअली, सॉरी, 1/km की वैल्यू तो डिक्रीज हुई है, बट km की वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज हुई। और आप देख सकते हैं स्लोप भी इंक्रीज हुआ है, स्लोप बढ़ गया, ये लाइन अब और ज्यादा, लाइन और ज्यादा स्ट्रेट हो चुकी। गॉट इट? So this is how we will represent a competitive inhibition on a Lineweaver-Burke plot। सिर्फ चेंज किस में करना है? स्लोप में। और स्लोप चेंज हुई तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है दैट इज रेफर्ड टू एज केएम, केएम की वैल्यू है वह इंक्रीज हो गई, तो स्लोप इंक्रीज हो गया, केएम इंक्रीज हो गया। कितने टाइम इंक्रीज हो वो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? कि लेट्स से इस ग्राफ के ऊपर यहां पर कुछ वैल्यू 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और यहां पर 4 है। तो कैन यू कैलकुलेट द फैक्टर अल्फा? तो हम कहेंगे यस वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज नॉर्मल के एम की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी, नॉर्मल 1, नॉर्मल के एम की वैल्यू कितनी है हम कैसे निकालेंगे? तो 4 इज अ वैल्यू ऑफ -1/km, so -1/km is equal to -4, इधर इधर वैल्यू सारी माइनस में होगी, माइनस माइनस कट गए, km की वैल्यू है वह 0.25 आ गई। अब कितनी आ गई? km डैश, तो km डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? km डैश की वैल्यू हो जाएगी वापस उसी तरीके से कि -1/km डैश, सिंस -1/km डैश इज इक्वल टू -2, इसलिए माइनस माइनस तो कट गया, km डैश की वैल्यू कितनी आई? तो km डैश की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? km डैश जो निकल कर आई हमारे पास, तो पहले तो हमने यहाँ से 4 के हिसाब से निकल लिया, दैट इज -1/km इज इक्वल टू -4, तो km की वैल्यू आई 0.25। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा अल्टर्ड km, दैट इज -1/km डैश इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कट गया, km डैश निकल कर कितना आ गया? 1/2, एंड 1/2 मीन्स कितनी निकल आई? 0.5। इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल सा है, दैट km डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ km, एंड फैक्टर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो km डैश बाय km, एंड दैट वुड बी km डैश की वैल्यू कितनी है? 0.5, km की वैल्यू कितनी है? 0.25, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? तो इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज इंक्रीज, what has been increased in the km value। ये सब नोट डाउन कर लें कि कैसे हम अल्फा को कैलकुलेट करते हैं, km में कितना इंक्रीज हुआ वो हम पता कैसे करते हैं। So moving further,
एग्जाम्पल, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स इंक्लूड फर्स्ट स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स। Statin group of drugs, they competitively inhibit an enzyme referred to as, the enzyme which is inhibited by the statin group of drug is an HMG coenzyme A reductase. And we can also write a normal substrate for this. The normal substrate for HMG coenzyme A reductase, as its name suggests, is HMG coenzyme A. तो दिस इज नॉर्मल सबस्ट्रेट। नॉर्मल सबस्ट्रेट की जगह पर कौन आकर वहां पर बाइंड हो गया है या बाइंड हो सकता है नॉन कॉम्पिटिटिवली, सॉरी कॉम्पिटिटिवली, दैट इज अ, जो इनहिबिटर यहां पर आकर बाइंड होता है, दैट इज अ स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग। देयर आर वेरियस स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक लोवास्टैटिन एटसेट्रा। सिमिलरली मैलोनेट, or we can say malonic acid. Malonate or malonic acid, it competitively inhibit another enzyme referred to as succinate dehydrogenase. It competitively inhibit succinate dehydrogenase. The normal substrate for succinate dehydrogenase, as name suggests, is succinate. Then sulfur drugs, they competitively inhibit. It is an antimicrobial drug, non-competitively inhibit the enzyme referred to as dihydroopterate synthase. The normal substrate for this is para-amino-benzoic acid, could also be referred to as, abbreviated as PABA. So जहां पर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड आकर बाइंड होना चाहिए था, वहां पर सल्फर ड्रग्स आकर बाइंड होते हैं। Although sulfur drugs, they do not have effect on animals because animals they do not have this enzyme. और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइडिऑक्सी आइनोसिन, नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसको शॉर्ट में DDI कहा जाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिट द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि HIV का या रेट्रोवायरस का एक एंजाइम। तो ड्रग्स लाइक एंटी कैंसर ड्रग लाइक aminopterin, they can non-competitively inhibit the enzyme referred to as dihydrofolate reductase. So list is very long. For these competitive inhibitors. So important thing to keep in mind is in competitive inhibition, first there is a formation of only EI complex. Second, there is no change in Vmax but Km increases. Third, the inhibitors and the substrate, they have similar molecular compatibility for a substrate binding site. And fourth important point is that this reversible inhibition, beside decreasing the concentration of inhibitor, could also be reversed by increasing the substrate concentration. Substrate की concentration बढ़ाने पर भी इस तरीके के इनहिबिटर को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल यू कैन टेक केस दैट
ड्यू टू अ मिथाइल पॉइजनिंग, किसी पर्सन ने मिथेनॉल पॉइजनिंग हुई, यानी मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया। मिथेनॉल अगर पर्सन की बॉडी में रहा तो उसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और लेट से अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम ने जो कुछ भी पर्सन ने, पेशेंट ने मिथेनॉल गलती से कंज्यूम कर ली है, उसको कन्वर्ट कर देगा फॉर्मेल्डिहाइड में, एंड दिस फॉर्मेल्डिहाइड कुड बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड इज वेरी टॉक्सिक। फॉर्मिक एसिड है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, कोमा, until it lead to a death. So if a person accidentally has consumed a methanol, then the end product would be formaldehyde convert to a formic acid. Now the treatment, the immediate treatment for this could be that to such patients give them ethanol. और इथेनॉल देने का बेनिफिट क्या होगा, ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज विल नाउ इन कॉम्पिटिशन इनिबिट होना शुरू होगा। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज अब इथेनॉल के ऊपर एक्ट करेगा जिससे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड अगर बनता भी है तो वह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत टॉक्सिक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम इधर की तरफ बिजी हो, न कि मिथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मिथेनॉल के कंपैरिजन में इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा देनी चाहिए बाय गिविंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन। और टाइम के साथ साथ अगर मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो टाइम के साथ साथ मिथेनॉल है वह यूरिन के साथ, किडनी उसको फिल्टर करेगा और यूरिन के साथ उसको एक्सक्रीट कराया जा सकता है। देन so that is the reason how, that is the way how this methanol poisoning is treated. Then moving further, second category of inhibitors are non-competitive inhibition or non-competitive inhibitor. In non-competitive inhibition, the binding site of an, you can say, a inhibitor and a binding site for a substrate is different. So this is, let's say, an enzyme. A substrate binds to this site, that is, substrate and inhibitor do not have a similar molecular compatibility, and a inhibitor binds to this site. Inhibitor binds to this site. So now there is no competition because the binding site of substrate is different and binding site of inhibitor is different. Such kind of inhibition where the binding of substrate do not affect, so inhibition in which binding of substrate do not affect binding of, more accurately, binding of inhibitor do not affect binding of substrate, because the binding site for a substrate is different, binding site of inhibitor is different. एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बना, ES कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में चला गया, एंजाइम वापस फ्री हो गया। एंजाइम के साथ इनहिबिटर आकर बाइंड हुआ, EI कॉम्प्लेक्स बन गया। चाहे ES बने चाहे EI बने, ES बनने के बाद भी उसके ऊपर इनहिबिटर आकर बाइंड हो सकता है, एंड देन देयर कुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ ESI कॉम्प्लेक्स, या EI बना तो सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, वापस ESI कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो हियर व्हाट वी कैन से इज दैट इन दिस केस बोथ बाइनरी, that is EI, and ternary, that is ESI complex are formed. दोनों के दोनों तरीके कॉम्प्लेक्स है वह बन रहे।
Because why ESI complex is formed? Because the binding site of substrate is different and binding site of inhibitor is different. Coming to the kinetic parameters, what would be the effect on Vmax and what is the effect on Km? So since we are saying that binding of inhibitor do not affect binding of substrate, it means Km unchanged. ये तो बात क्लियर हो गई. Km will remain unchanged. Because Km gives you information about the affinity and affinity will still remain the same because that site is vacant. जहां सबस्ट्रेट को बाइंड होना वो साइड तो खाली पड़ी है, और वो साइड अगर खाली है तो सबस्ट्रेट जितना एफिशिएंटली पहले बाइंड हो रहा था उतना ही एफिशिएंटली अभी भी बाइंड होगा. पर सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है. अगर ESI कॉम्प्लेक्स या EI कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो देन दीज ESI कॉम्प्लेक्स they cannot be converted to ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा. और इधर की तरफ अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अगर मान लें 10% एंजाइम इस रास्ते पर गए, 10% एंजाइम इस रास्ते पर गए, तो इस रास्ते पर तो अब 80% एंजाइम ही गए K2 वाली डायरेक्शन में. अब 10% एंजाइम या 20% एंजाइम इनएक्टिवेट हो, वो डिपेंड करता है इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के ऊपर और इनहिबिटर की एंजाइम की एफिनिटी इनहिबिटर के लिए कितनी. बट कुछ परसेंट भी अगर इस डायरेक्शन में चला गया, यानी अगर इवन इफ अ स्मॉल परसेंटेज कन्वर्ट टू EI एंड स्मॉल परसेंटेज गेट कन्वर्ट टू ESI, then the 100% enzyme, total enzyme, they cannot be sent in the direction of product. चाहे आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो उससे कोई फायदा नहीं होगा. सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा भी दो तो ES कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा, पर ES कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनने का मतलब गारंटी नहीं दैट इट विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. स्टिल इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, अभी भी ये इस डायरेक्शन में आ सकता है. सो सेम Vmax कैन नॉट बी अटेन्ड. सेम Vmax वापस अटेन नहीं की जा सकती, बट Km रिमेन अनचेंज्ड. सेम Vmax कैन नॉट बी अटेन्ड मीन्स Vmax डिक्रीजेस. Vmax है वह डिक्रीज हो जाता है. कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीज हो रहा था, यहां पर Vmax है वह डिक्रीज हो रहा है. सो these are two important changes in non-competitive inhibition. That is, in non-competitive inhibition, what is happening? In non-competitive inhibition, you can say that Vmax decreases. That is, you can say altered Vmax, Vmax dash would be original Vmax divided by factor alpha. वहां पर Km फैक्टर अल्फा से बढ़ जाता था, यहां पर Vmax will decline by the factor alpha. And what would the value of factor alpha? Value of factor alpha would be 1 plus concentration of inhibitor divided by Ki. इसके ऊपर फैक्टर अल्फा डिपेंड करता है. दैट इज ऑल्दो इनहिबिटर किसी एंजाइम की दूसरी जगह पर जाकर बाइंड हो रहा है, पर इस जिस जगह पर भी ये जाकर बाइंड हो रहा है उस जगह के लिए भी तो कोई एफिनिटी होगी. इनहिबिटर इज बाइंडिंग टू दिस साइट, पर इस साइट के लिए कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर उसकी एफिनिटी डिपेंड करती है. जितना ज्यादा इनहिबिटर की कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा Vmax कम होता जाएगा. जितनी ज्यादा एंजाइम की एफिनिटी इनहिबिटर के लिए ज्यादा, यानी I की वैल्यू Ki की वैल्यू ज्यादा, Ki की वैल्यू ज्यादा मतलब अल्फा ज्यादा तो Vmax अल्टर्ड Vmax उतनी ही कम. देन यू कैन से दैट Km रिमेन अनचेंज्ड. Km में कोई चेंज नहीं आता. Km रिमेन unchanged. अगर हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात करें, दैट इज V0 इक्वल टू Vmax S Km प्लस S.
तो मॉडिफाइड हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, दैट इज अल्टर्ड V0 वुड बी इक्वल टू Vmax डिवाइड बाय फैक्टर अल्फा S, Km में कोई चेंज नहीं, प्लस S, और Vmax बाय अल्फा की जगह पर हम Vmax डैश भी लिख सकते हैं। और उसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम इधर की तरफ सेम थिंग लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन के लिए लिखें तो 1 बाय V0 इक्वल टू Km बाय Vmax 1 बाय S प्लस 1 बाय Vmax। मॉडिफाइड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी, V0 वुड बी इक्वल टू Km Vmax, or Vmax would be divided by alpha, means alpha will come on this side, plus 1 by S plus alpha by Vmax. That is, slope you can see it will change, and not only slope, y-axis intercept also get changed. Y-axis intercept will also change. So only Km will remain same. So this is in presence of inhibitor. Equation will get modified like this. Then moving further, the same thing could be represented on Michaelis-Menten equation, Michaelis-Menten plot, and a Lineweaver-Burke plot. What you have to keep in mind, Km unchanged and Vmax must decrease. So let's say this is the Vmax in presence of, this is Vmax in absence of some kind of inhibitor, and let's say the Vmax value, let's say the Vmax value is 10, then half Vmax would be 5, and the substrate concentration which is required to achieve half Vmax, suppose that is, let's say some 10 millimolar substrate concentration. This is the Km. This is when a inhibitor is absent. But when a inhibitor is present, what you see is that there is V0 is somewhat different, and V0 is never able to achieve same Vmax. V0 कभी भी same Vmax को achieve नहीं कर पाती. Now you get a modified Vmax, and let's say modified Vmax is now only 8. If modified Vmax is 8, then half of modified Vmax would be also 4, और 4 के लिए जो substrate concentration चाहिए उसे हम Km कहेंगे, and Km is still 10 millimolar. So what we are saying is that there is no change in Km, but value of Vmax will decrease. Same thing could be represented over here, that this 1 by, this is, you can say, a line in presence of a inhibitor, and this is a line when no inhibitor is present. This is under normal scenario, that is in absence of inhibitor. What you see is that there is a change in 1 by Vmax, there is no change in Km 1 by Km. यानी इस पॉइंट पर तो आप चेंज कर ही नहीं सकते. This should remain static. Why this should remain static? Because there is no change in Km. Km remain unchanged. So you cannot change this particular point. But you know slope depends upon Km by Vmax.
और Vmax अगर कम हो जाती है तो स्लोप बढ़ेगी. तो you have to keep this point fixed and you have to increase the slope. आपको slope को increase करना है. तो only way by which you can do is like this, putting this point constant, and this is how you are increasing the slope. Due to this, now this point will get altered. 1 by Vmax तो increase हो जाएगी, लेकिन Vmax की वैल्यू कम हो जाएगी. So 1 by Vmax will increase, but value of Vmax will decrease. So this is how we represent this non-commutative inhibition on Michaelis-Menten plot and Lineweaver-Burke plot. नोट डाउन कर लो इस ग्राफ को भी. तो नोट डाउन किया आपने. लेट्स मूव फर्दर. टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ non-commutative inhibitor. One important example is, the name of inhibitor is L-isoleucine. L-isoleucine inhibit an important enzyme referred to as threonine dehydratase. So this is the inhibitor and this is the enzyme. We can take another example of this reversible non-commutative inhibition is cyanide, which inhibit one of the electron transport chain complex enzyme, that is complex 4 cytochrome oxidase. Both are often taken as an example of non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition is based upon a very simple assumption. And what is simple assumption? That let's say this is an enzyme when no inhibitor is there, and this is the enzyme when a inhibitor is there. And we make an assumption that whether our inhibitor is bound to an enzyme or it is not bound to an enzyme, the affinity for the substrate is same. The affinity for substrate is same, and if affinity for substrate is same, means Km remain unchanged. But practically, if we think, then this is not possible, because if binding of substrate it induces a conformal change in enzyme, then why a binding of inhibitor will not bring a change? What should happen is that even the binding of inhibitor should also bring a change in enzyme, and if there is some change in the conformation of an enzyme, then definitely the binding of substrate will also be get influenced, and if binding of substrate will get also influenced, then we will see that there is a change in K. So non-commutative inhibition is based upon simple assumption. Actually doesn't happen. Most often, instead of non-commutative inhibition, what we find is a kind of mixed inhibition. In mixed inhibition, what happens is that enzyme can readily binds to the substrate. No doubt, if enzyme is there and a free substrate is there, free enzyme is there, free substrate is there, readily there is a formation of an ES complex. Let's say this is the formation of a ES complex. There is some conformal change in, let's say, enzyme as well as substrate. But if a inhibitor binds to the some other site on enzyme, it induces some negative kind of change in the conformation of an enzyme. If
inhibitor binds over here, if inhibitor binds over here, it induces a conformation. It is not like that there is no change. Still a substrate can bind, but for this you need a comparatively higher substrate concentration, then only there would be a formation of ESI complex. So पहले लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से काम चल रहा था, अब हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई रखनी पड़ा. मीन्स व्हाट वी हैव टू अज्यूम इज दैट बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर negatively affect binding of substrate. Binding of inhibitor negatively affects the binding of substrate. It means affinity decreases, and if affinity decreases means the value of Km increases. Are you getting this point? So there is a very small difference if you compare it with non-competitive inhibition. That is, inhibitor still is binding to some other site. Binding of inhibitor could allow still the binding of substrate, but you need a very high substrate concentration. Enzyme substrate complex can form, still a inhibitor will bind, and there could be a formation of ESI complex. But the value of Km is increasing because and binding of inhibitor is negatively affecting the binding of an enzyme. आप कितनी भी सबस्ट्रेट डिकंसंट्रेशन को रेज करें, ES कॉम्प्लेक्स बनवा सकते हैं, पर आप प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में सारे एंजाइम को नहीं भेज सकते. कुछ एंजाइम इस डायरेक्शन में जरूर जाएंगे. 10% एंजाइम भी इधर की तरफ गए तो 90% एंजाइम ही इस डायरेक्शन में जाएंगे. यानी सेम Vmax cannot be attained. सेम Vmax को अटेन नहीं किया जा सकता है, यानी Vmax will decrease. So in this kind of inhibition, Km increases like competitive inhibition and Vmax decreases like non-competitive inhibition. So it is a mix of two. That's why it is often referred to as mixed inhibition. There is a decline in Vmax and there is an increase in the Km value. Then moving further, और आगे बात करते हैं. That Vmax, altered Vmax would be Vmax by factor alpha, and Km would be, or Km dash would be, will increase by the factor of alpha times of K. In this case, the observed velocity V0 would be, you will say that it would be altered Vmax, Vmax dash, upon Km dash, because it will also get altered. One by S plus 1 by Vmax dash. So इस केस में ग्राफ पे हम देखेंगे स्लोप की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी. Why it will increase? Because Vmax have a
हमने माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन को थोड़ा रिवर्स लिख दिया। 1/v0, ये हम लाइनविवर-बर्क प्लॉट की बात करें, 1/v0 डैश वुड बी इक्वल टू km dash by vmax dash. Slope will increase because the value of km is increasing, that will promote the increase in slope, and the value of vmax is also decreasing, that will also help in increasing the slope. So इस केस में स्लोप बहुत तेजी से बढ़ेगी। 1/vmax की वैल्यू यानी vmax की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब 1/vmax की वैल्यू इंक्रीज होगी। So that could be graphically represented like this. You can see that in presence of inhibitor, let's say this is the curve in presence of inhibitor. In presence of inhibitor, what you are observing is that the Vmax has decreased and the Km has increased. Km dash has been increased. लाइनविवर-बर्क प्लॉट के ऊपर आपको न तो ये वाला पॉइंट कांस्टेंट रखना है, लेट्स से दिस इज द कर्व अंडर अ नॉर्मल सिनेरियो, तो आपको इस पॉइंट को भी कांस्टेंट नहीं रखना है 1/vmax को, और इस पॉइंट को भी कांस्टेंट नहीं रखना है, और km को इंक्रीज करना और तेजी से इंक्रीज करना है। तो तेजी से इंक्रीज कुछ इस तरीके से करेंगे, स्लोप तेजी से इंक्रीज हुई और स्लोप को तेजी से इंक्रीज करने पर आप देख सकते हैं 1/vmax की वैल्यू इंक्रीज हो गई है पर vmax की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। ऐसे ही km की 1/km की वैल्यू नो डाउट डिक्रीज हो गई है पर km की वैल्यू है वह इंक्रीज हुई है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज km वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड हियर vmax वैल्यू है वह डिक्रीज हो रही। सो रेसिप्रोकल प्लॉट के अंदर, नॉर्मल प्लॉट के अंदर अगर हम जीरो वाले एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती है, जीरो वाले पॉइंट से दूर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, जीरो की तरफ आते हैं तो घटती है। रेसिप्रोकल प्लॉट के अंदर अगर हम जीरो से दूर जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ने की बजाय वैल्यू घट रही है, जीरो की तरफ जाते हैं, ये जीरो वाला पॉइंट है, जीरो की तरफ जाते हैं तो वैल्यू है वह इंक्रीज होती है क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्लॉट है। तो रेसिप्रोकल प्लॉट के अंदर ट्रेंड्स ऑपोजिट देखने को मिले। और स्लोप तो आप देख सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोप डिपेंड्स अपॉन km/vmax। तो दोनों ही फैक्टर्स स्लोप को इंक्रीज कराने का काम करते हैं। सो रियल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रेयर, most often you find a mixed kind of inhibition. But if you assume that inhibitor do not affect a binding of substrate, then it becomes a non-competitive inhibitor. Then last inhibitor is a uncompetitive inhibitor. In competitive inhibitor, only binary complex EI complex is formed. In non-competitive and mixed inhibition, both binary as well as ternary complex is being formed, EI and ESI. तो uncompetitive inhibition में there is an only ternary complex, that is ESI is formed. आपके पास बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ ESI कॉम्प्लेक्स बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का आकर इंटरेक्शन होना जरूरी है, फर्स्ट ES कॉम्प्लेक्स शुड फॉर्म, and once an ES complex has been formed, then even inhibitor can join the party and there is a formation of ESI complex. So first a substrate should bind. Inhibitor is there in a surrounding of an enzyme, but a inhibitor cannot bind to a free enzyme. So in case of uncompetitive inhibition, inhibitor cannot bind to free enzyme. Further, presence of
inhibitor in surrounding of enzyme facilitates binding of substrate, facilitates the binding of substrate. So more ES complex is formed, ताकि ES complex ज्यादा बने. In other words, thus inhibitor is increasing affinity of enzyme for substrate. सबस्ट्रेट के लिए जैसे एफिनिटी को बढ़ा रहा है, यानी Km को जैसे कि डिक्रीज कर रहा है. So it is acting like that, it is helping the enzyme, it is creating a favorable micro environment where water is often excluded, that's ताकि सबस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा एंजाइम के साथ इंटरेक्ट. इनहिबिटर खुद तो बाइंड हो नहीं सकता, और एंजाइम के आसपास इस तरीके का माहौल बनाता है कि सबस्ट्रेट तेजी से आकर बाइंड हो, जिसको देखकर ऐसा लग सकता है कि कितना अच्छा फ्रेंड है. इसे इनहिबिटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये तो एंजाइम की मदद कर रहा है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में, Km की वैल्यू को घटा रहा है. रियल स्टोरी अब शुरू. होता क्या है कि बाइंडिंग ऑफ substrate induces conformational change in enzyme such that inhibitor binding site get exposed and inhibitor also binds to enzyme to ES complex to form ESI, ternary complex. This ESI complex or ternary complex is inactive. So एंजाइम इस तरीके से था, उसके आसपास फ्री सबस्ट्रेट था, तब तक इनहिबिटर बाइंड नहीं हो पा रहा था. इनहिबिटर वाज देयर इन अ सराउंडिंग, इनहिबिटर वाज देयर बट इनहिबिटर वाज नॉट एबल टू बाइंड. So inhibitor in a near vicinity creates an environment that readily substrate can bind to it, and once a substrate binds to this, let's say this is the binding of a substrate, and once a substrate get bind to this, there is some kind of conformal change in the enzyme. और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन हुआ, नई साइट एक एक्सपोज हो गई, और नई साइट एक्सपोज होते ही अब उस जगह पर इनहिबिटर आकर बाइंड होना शुरू हो गया. दैट इज अ बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर. 10% भी इस डायरेक्शन में गए तो अभी देखते तो 90% एंजाइम ही जा रहे हैं, और 90% एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब अब सेम Vmax कैन नॉट बी अटेन. सो व्हाट यू विल से दैट because the ternary complex is inactive, thus Vmax also decreases. Km डिक्रीज हुई, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फ्रेंड किस काम का जो फाइनली Vmax को घटा दे, क्योंकि एंजाइम का मेन काम, एंजाइम का मेन काम सबस्ट्रेट के साथ गले मिलना नहीं है.
सिर्फ ईएस कॉम्प्लेक्स बनाकर खुश होने से काम नहीं चलेगा। मेजर जो उसका फंक्शन है दैट इज टू convert more and more ES complex into product, और यहां पर इनहिबिटर ES कॉम्प्लेक्स बनाने तक को तो फैसिलिटेट करता है, पर आगे चलकर ES को EP में कन्वर्ट होने की बजाय ज्यादातर ES को ESI वाली डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देता है। सो वी कैन से दैट हियर Vmax decreases and Km also decreases. So important point is in uncompetitive inhibition, what happens in uncompetitive inhibition? So in uncompetitive inhibition what you find is, जहां कहीं पर भी uncompetitive inhibition है वहां पर in uncompetitive inhibition what happens is the Km value decreases and Vmax value also decreases. So altered Km would be equivalent to original Km divided by factor alpha, and Vmax, that is altered Vmax dash, would be also Vmax divided by factor alpha, and factor alpha will depend upon 1 plus I by Ki. Now if we see on Lineweaver plot, what we find is that Lineweaver plot is 1 by V0 equal to Km by Vmax 1 by S plus 1 by Vmax. What we say is that would be a change in a slope. Sorry, Km की वैल्यू जितनी डिक्रीज हुई उतनी उतनी Vmax में भी अगर डिक्रीज हो गई तो स्लोप में रिमेन सेम। स्लोप है तो हो सकता है जैसे पहले था वैसा रहे, although Km is a Km by alpha and Vmax is also a Vmax by alpha. While यहां पर 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, फैक्टर अल्फा आ जाएगा अगर आप 1 बाय V0 डैश की बात कर रहे हैं तो इट मींस Vmax की वैल्यू है वह कम होनी चाहिए, जो कि यहां पर ग्राफिकली नेक्स्ट डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट की गई है। यू कैन सी हियर। सो Vmax you can see has decreased and the altered Km has also decreased. 1 by Vmax has increased but Vmax has decreased. 1 by Km has increased. This is the line in presence of inhibitor, that you are getting a two parallel lines. You are getting almost two parallel lines. So slope of both lines they are running parallel. It means slope of both the lines are same, because slope depend किसके ऊपर करता है, slope depend करता है Km by Vmax पर, और हम कह रहे हैं इसमें भी डिक्लाइन हुआ, इसमें भी डिक्लाइन हुआ, यानी वैल्यू सपोज पहले कुछ इस तरीके से थी, मान लें 4 और 2, अब इसमें डिक्लाइन होकर 4 वाली वैल्यू 2 हो गई और 1 वाली वैल्यू डिक्लाइन होकर 1 हो गई। पहले भी स्लोप 2 था और अभी भी स्लोप 2 है, तो स्लोप रिमेन ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली हमेशा पैरेलल लाइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देयर मे बी माइनर डिफरेंसेस एज वेल। अगर इस तरीके की बजाय ऐसी कुछ भी ग्राफ है तो भी हम उसे, ऐसा भी कुछ है तो भी हम उसे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ही कहेंगे, बिकॉज you can see that both the values they has altered. एग्जाम्पल लिया जा सकता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, that inhibitor L-phenylalanine, which is an amino acid, inhibit an enzyme alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase mainly it removes a 5' phosphate
फ्रॉम द एंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के एंड से 5 प्राइम फॉस्फेट रिमूव करने का काम करता है। एल फिनाइलिन अगर एंजाइम के चारों तरफ अवेलेबल है, बीइंग अ नॉन पोलर अमीनो एसिड, it facilitates the binding of more and more nucleic acid to the enzyme. But once this nucleic acid bind to the active site of enzyme, there is a conformational change in enzyme और phenylalanine भी आकर bind हो जाता है. So it is a classical case of a uncompetitive inhibition. So जो डिफरेंट तरीके के इनिबिशन है उसको वापस यहां पर समराइज किया गया है कि जब किसी तरीके का इनिबिशन नहीं है तो माइकल्स मैंगटन इक्वेशन होगा V0 वुड बी इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस। वी मैक्स में अभी कोई अल्टरेशन नहीं है, के एम में कोई अल्टरेशन नहीं। अगर कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है तो उस कंडीशन में के एम इंक्रीज होगा, के एम विल इंक्रीज बाय द फैक्टर अल्फा, और अल्फा की जगह पर हमने वैल्यू लिखी है 1 प्लस आई बाय के आई। वह वैल्यू यहां पर दिस 1 प्लस आई बाय के आई, इट इज रिप्रेजेंटिंग फैक्टर अल्फा plus s. So what you will see that Vmax remain unchanged, but Km value increases, and Km value increases by factor alpha. So Km would be alpha times of Km. Vmax में कोई change नहीं. If it is a non-competitive inhibition, तो उस केस के अंदर Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और Vmax की वैल्यू डिक्रीज किससे हो जाती है, तो दैट इज Vmax डिवाइड बाय फैक्टर अल्फा। तो जो वी मैक्स है उस वी मैक्स को हमें किस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, अल्फा से। मिक्स्ड इनिबिशन के अंदर वी मैक्स की वैल्यू तो कम हो जाती है, यहां पर वी मैक्स की वैल्यू कम हो रही थी, यहां पर वी मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है, यहां के एम की वैल्यू बढ़ रही थी, यहां पर के एम की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये दोनों करेक्टर आ गया, इसलिए इसको क्या कहा, मिक्स्ड इनिबिशन। सो वी मैक्स डैश में भी, वी मैक्स में भी चेंज आएगा, that is Vmax dash would be Vmax by factor alpha, while Km dash would be Km alpha times of Km। अनकंफर्टेबल इनिबिशन में ये भी डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा। So what would the equation? So Vmax S Km plus S बाय फैक्टर अल्फा। सो फैक्टर अल्फा यहां पर रख देंगे, फैक्टर अल्फा यहां पर रखने का क्या फायदा हुआ कि ये केएम से तो मल्टीप्लाई हो गया और वी मैक्स को ये डिवाइड करा। इनको हम लाइनवियर-बर्क प्लॉट के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्वेशन किस तरीके से होगी। सो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में तो क्या हो रहा है, फैक्टर अल्फा से केएम की वैल्यू चेंज हो रही है। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर वी मैक्स में चेंज आता है, और जो केएम में चेंज आता है वो इस लाइन में है ही नहीं, क्योंकि केएम है वो हम ग्राफ से पता चलता है। स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप, स्लोप विल रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज अ केस ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन, क्योंकि वहां पर केएम वी मैक्स भी कम होता है, केएम भी कम होता है। मिक्स्ड इनिबिशन के अंदर वी मैक्स की वैल्यू है वह डिक्रीज हो रही है और स्लोप भी चेंज हो रहा है, स्लोप की जगह पर क्या आ गया, अल्फा टाइम्स ऑफ केएम। क्लियर, ये तीनों नोट डाउन कर लें आप। इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके का इनिबिशन, यू मस्ट एबल टू डिफरेंशिएट these different, you can say, inhibitors simply by looking at these लाइनवियर-बर्क इक्वेशन, या इससे पिछली वाले डायग्राम में जो भी इक्वेशन थी माइकल्स मेंटन इक्वेशन, इनको देखकर या लाइनवियर-बर्क इक्वेशन को देखकर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए।
फिर नोट डाउन कर लिया। देन अब तक हम डिस्कस कर रहे थे माइकलिस मेंटेन एंजाइम के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस हम यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। माइकलिस मेंटेन एंजाइम्स, दे आर फर्स्ट composed of single subnet, they have which is referred to as which has a role of catalysis, जिसको हम कैटालिटिक यूनिट भी कह सकते हैं। देन another important property of this Michaelis Menten enzyme is that they shows a phenomenon of saturation kinetics, ये भी हम देख चुके हैं। they follow the phenomenon of saturation kinetics, और सैचुरेशन काइनेटिक्स के हिसाब से इक्वेशन की बात करें तो दैट इज V0 वुड बी इक्वल टू V max S Km plus S, और another important thing is that कर्व कैसा आएगा इनका, you will get a rectangular hyperbolic curve, that is ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये माइकलिस मेंटन एंजाइम है जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को ओबे करते हैं, इसलिए उनका जो कर्व है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है। माइकलिस मेंटन एंजाइम के बारे में और इंपॉर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं, दे आर वेरी फास्ट एंजाइम, एंड मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिज्म आर दिस टाइप, इस तरीके के एंजाइम होते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माइकलिस मेंटन एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट नहीं करते। तो अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में, ऐसे एंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो ऑल्दो वो बहुत कम जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, बट देन ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सच एंजाइम्स जो रेगुलेटरी एंजाइम की तरह काम करते हैं, दे आर कंपोज ऑफ मल्टीपल सबनेट्स एंड दीज आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। Allosteric enzymes, these are oligomeric in nature, that is composed of multiple subnets, and the number of subnets could range from 6 to 12. Even more number of subnets could be there, but usually they are in a range of 6 to 12. So there are multiple subnets, and these multiple subnets, they could be divided into टू डिफरेंट टाइप्स। जो मल्टीपल सबनेट्स हैं उनको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर सम सबनेट्स जो कि कैटालिटिक है, देयर आर सम यूनिट्स व्हिच आर हैविंग अ कैटालिटिक फंक्शंस। कैटालिटिक सबनेट्स उनको कहेंगे जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर कर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ द कैटालिटिक सबनेट इज टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। Beside catalytic subnets, they also has a regulatory subnets। इस तरीके से उनके पास regulatory subnets हैं, वह भी present होते हैं। They also has a regulatory subnets। More important, what you'll find is that the gene for a regulatory subnet is different। There is a total different genes जिससे रेगुलेटरी सबनेट्स कंपोज होती है, और इसी तरीके से कैटालिटिक सबनेट का जीन एकदम अलग तरीके का। So the catalytic and regulatory functions, they are encoded by distinct proteins, and these distinct proteins, they are encoded by entirely different genes। एकदम different जीन से वह एनकोड होते हैं। देन मूविंग फर्दर,
As an example, you can take a case of Rubisco. Rubisco is composed of 8 small subunit and 8 large subunit. While smaller one, they work as a catalytic subunit, while larger one, they play a role as a regulatory subunit. There are different genes for a small subunit and large subunit. So there are 2 different types of binding site on each enzyme. जो कैटालिटिक सबनेट है उसके ऊपर जो बाइंडिंग साइट है, जो कैटालिटिक सबनेट है उसके ऊपर जहां पर सबस्ट्रेट आकर इंटरेक्ट करता है, जहां पर सबस्ट्रेट आकर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करता है, दैट इज रेफर टू एज अ आइसोस्टेरिक साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या आइसोस्टेरिक साइट कहा जाएगा। जबकि रेगुलेटरी सबनेट पर जो बाइंड होने वाला रेगुलेटरी सबनेट, दिस रेगुलेटरी सबनेट, रेगुलेटरी सबनेट के ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट विल बाइंड, दैट कुड बी अ पॉजिटिव रेगुलेटर और दैट कुड बी अ नेगेटिव रेगुलेटर। इस साइट को जहां पर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आकर बाइंड होते हैं, दैट कुड बी अ पॉजिटिव रेगुलेटर, दैट कुड बी नेगेटिव रेगुलेटर, जहां पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव रेगुलेटर आकर बाइंड होते हैं, उस जगह पर उस साइट को एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। So there is isosteric site as well as there is an allosteric site. So modulators, उनको मॉड्यूलेटर्स लिए कहा क्योंकि वो एक्टिवेटर की तरह भी काम करते हैं और रिप्रेसर की तरह भी काम करते हैं। They binds to an allosteric site while substrate bind on an isosteric site. Then अगर इन एंजाइम में से रेगुलेटरी सबनेट को हटा दिया जाए तो जो कैटालिटिक सबनेट अलोन है, दैट इज कैटालिटिक सबनेट अलोन, दैट विल एक्ट एज अ माइकलिस मेंटेन एंजाइम, फिर वह माइकलिस मेंटेन एंजाइम की तरह काम करे। लेकिन जब तक रेगुलेटरी सबनेट साथ में है और रेगुलेटरी सबनेट के ऊपर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है, तब तक उनका बिहेवियर कुछ अलग होगा। Then another important properties of the allosteric enzyme is that they are intracellular, work within a cell. वह सेल के बाहर काम नहीं करते, क्योंकि माइकलिस मेंटेन एंजाइम सेल के अंदर, सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं। जैसे कई सारे एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में काम करते हैं, ऑल ऑफ देम दे आर माइकलिस मेंटेन एंजाइम। Even we can add an enzyme in a detergents to remove the stains of a protein. So these proteases, they are working even outside the cell. But जितने भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं वह सारे के सारे सेल के अंदर ही काम करते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम हिल्स इक्वेशन को ओबे करते हैं, वो माइकल्स मेंटेन इक्वेशन को ओबे नहीं करते, दे ओबे अ हिल्स इक्वेशन। So Hill's equation is we can say modified Michaelis-Menten equation. ये मॉडिफाइड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है? V0 इक्वल टू V मैक्स S Km प्लस S। दिस इज अ नॉर्मल माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। इसके ऊपर अगर हम रेज टू पावर n लगा दें, यहां पर भी रेज टू पावर n लगा दें, तो अब ये हिल्स इक्वेशन हो गई, जहां पर n is Hill's coefficient। यानी हम ये कहना चाहते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करें तो वेलोसिटी डबल नहीं होगी, 4 टाइम्स हो सकती है, 6 टाइम, 9 टाइम्स हो सकती है। वो डिपेंड करता है ऑन द
power n, where n is the Hill's coefficient. So you will not get a direct relationship, you will get इस ग्राफ, इसके हिसाब से आप ग्राफ प्रिपेयर करेंगे तो जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वेलोसिटी सबस्ट्रेट से और तेजी से बढ़ेगी, और जितनी तेजी से इंक्रीज होगी उतनी ही तेजी से वापस डिक्लाइन भी होगी. आपके पास कर्व है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होने की बजाय यू विल फाइंड दिस सिग्मोइडल कर्व. सो यू विल फाइंड अ सिग्मोइडल कर्व. So there is a sigmoidal curve. Then most often metabolic reactions में जो फर्स्ट कमिटेड स्टेप है, जहां से डिसाइड होता है कि अब ग्लाइकोलाइसिस चलेगी या एचएनपी पाथ चलेगा या कोई भी मेटाबॉलिक पाथ चलेगा, जहां से डिसीजन मेकिंग होती है एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे की, उस जगह पर एलोस्टिक एंजाइम्स हैं वह काम करते हैं. सो मेटाबॉलिक पाथ लेट से ए बी सी, ये कोई एक मेटाबॉलिक पाथ है, हाइपोथेटिकल मेटाबॉलिक पाथ है. यहां से बी से एक और कोई पाथ एक्स वाई जेड की तरफ जा रहा है लेट से. तो हम ये कह सकते हैं यहां पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, दैट आइदर इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, और यहां पर वापस डिसीजन मेकिंग हो रही है दैट इज गोइंग टू मूव इनटू पाथ जेड. सो ई पाथ पर एंड प्रोडक्ट जेड बनेगा या ई बनेगा, दैट इज बीइंग डिसाइडेड एट दी स्टेप. तो इन स्टेप पर आप देखेंगे, इस स्टेप पर या इस स्टेप पर यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम. यहां पर एलोस्टेरिक एंजाइम काम करेंगे. बाकी जितनी भी जगह है उन सब जगह पर माइकलिस मेंटन एंजाइम काम करेंगे. सो एट रेस्ट ऑफ प्लेसेस देयर वुड बी रोल वुड बी प्लेड बाय माइकलिस मेंटन एंजाइम. तो जहां डिसीजन मेकिंग होती है वहां पर आप एलोस्टेरिक एंजाइम को काम करता हुआ देख सकते हैं. तो ज्यादातर जगहों पर माइकलिस मेंटन एंजाइम है, पर काम की जगहों पर एलोस्टेरिक एंजाइम. देन these allosteric enzymes, they are often referred to as pacemaker enzymes. And why they are referred to as pacemaker enzymes? Because they are the slowest in cascade. तो कल भी हम या आज भी हमने डिस्कस किया, कल भी हमने जब बात कर रहे थे तब हमने डिस्कशन किया that step become rate limiting which is slowest in cascade, जो सबसे धीरे काम कर रही है. तो इनमें से ये एंजाइम बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत फास्ट काम कर रहे हैं. तो फिर कितना प्रोडक्ट ई बनेगा या जेड बनेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कैटालिसिस कैरिड आउट बाय एन एलोस्टेरिक एंजाइम. एलोस्टेरिक एंजाइम्स दे शोज अ फिनोमिनन ऑफ कोऑपरेटिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं वह कोऑपरेटिविटी को शो करते हैं. What we mean by cooperativity? तो cooperativity का मतलब है कि एक सबनेट दूसरे सबनेट को सबस्ट्रेट बाइंडिंग में मदद करती है. दैट इज, या तो एक भी सबनेट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगी, पर एक जगह पर एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बाइंडिंग होनी शुरू होगी तो अब तेजी से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब तक कि ऑल the subunits of an enzyme they get occupied, and all the subunits of an enzyme if they get occupied, तो फिर हम क्या कहेंगे, this value would be referred to as Vmax. उसे Vmax कहा जा सकता है. So we can say that each subunit is helping other subunit to easily recognize substrate and bind to it. इसे cooperativity phenomenon कहा जाता है. जहां कहीं पर भी cooperative phenomenon होगा, कर्व सिग्मोइडल आएगा. सो कंप्लीट जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक्स है वो दो ही तरह की होती है, या तो सैचुरेशन काइनेटिक्स या कोऑपरेटिविटी. जो भी सिंगल सबयूनिट के आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिसेप्टर्स, जो भी सिंगल सबयूनिट के हैं
उनका बिहेवियर माइकलिस मेंटन एंजाइम की तरह होगा, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, वह सैचुरेशन काइनेटिक्स को ऑबे करेंगे। ऐसे सारे प्रोटीन्स जो मल्टीपल सबनेट के हैं, उनका ग्राफ एलोस्टिक एंजाइम से रिजेंबल करेगा, यानी कर्व है वह सिग्मोइडल होगा। तो मायोग्लोबिन जो सिंगल सबनेट का है, उसका कर्व देखोगे तो आपको माइकल्स मेंटन एंजाइम से रिजेंबल करेगा, जबकि हीमोग्लोबिन जिसमें देयर आर 2 अल्फा चेन एंड देयर आर 2 बीटा चेन, वहां पर आप उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व देखेंगे तो वह सिग्मोइडल होगा। सो देयर इज अ ऑल और नन phenomenon. Then कोऑपरेटिविटी को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वन ऑफ द मॉडल इज रेफर्ड टू एज प्रोग्रेसिव मॉडल। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव मॉडल, इनिशियली व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो उस दौरान there is a negligible velocity because the enzyme is in T state, it is in a 10 state. 10 state means the subunits, they are not compatible for substrate binding. पर जैसे से आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रेज करते हैं, किसी न किसी सबस्ट्रेट, किसी न किसी साइट के साथ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट जरूर करेगा, और एक जगह पर अगर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो ये पास वाली सब यूनिट पर चेंज लेकर आएगा, ये और पास वाली सब यूनिट पर चेंज लेकर आएगा, ये और पास वाली सब यूनिट पर चेंज लेकर आएगा, एंड सो ऑन। ये इसके पास वाली सब यूनिट पर चेंज लेकर आएगा, और ये और पास वाली इसमें चेंज लेकर आएगा। सो एंजाइम विल मूव टू अ आर स्टेट। सो बाकी के सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड होने में, अब अगर यहां पर 10 है तो सेकंड साइड पर बाइंड होने पर 20 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें थोड़े टाइम में ही सेकंड साइड पर भी बाइंड हो गया, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ाया, थर्ड साइड पर भी बाइंड हो गया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन और बाइंड हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी बाइंड हो गया, और ऐसे तरह कर्व आ गया। यानी लगभग आप देखेंगे 20 तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहां पर हम प्लॉट कर लेते हैं, लगभग 20 तक तो ये सपोज मिलीमोलार कंसंट्रेशन। आप देखेंगे 10 मिलीमोलार तक कुछ नहीं हो रहा था, एक जगह पर कहीं पर बाइंड हुआ, और 20 मिलीमोलार तक तो पहुंचते पहुंचते हमारे पास क्या आ गई है, वी मैक्स। अगर एक सबनेट दूसरी सबनेट को कोऑपरेटिव हेल्प नहीं करती, तो 10 पर फर्स्ट सबनेट अगर बाइंड हुई है सबस्ट्रेट से, तो 20 पर सेकंड सबनेट को बाइंड होना चाहिए, 30 पर थर्ड को बाइंड होना चाहिए, 40 पर फोर्थ को बाइंड होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आनी चाहिए, जैसा कि माइकलिस मेंटन एंजाइम में होता है, जहां पर एक एंजाइम दूसरे एंजाइम की मदद नहीं करता, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक सबनेट दूसरे सबनेट की हेल्प कर रही है, असिस्टेंस कर रही है। अनदर मॉडल टू एक्सप्लेन the cooperativity is concerted model. According to concerted model, there are only two states, there is no intermediate stage, there are only two states, that is T state और R state। जबकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था, पहले T6 थी, फिर एक सबनेट R में कन्वर्ट हुई, बाकी की 5 T10 थी। यहां पर डिफरेंट स्टेजेस थी ना, जैसे यहां पर T6 चारों सब 6 subunit was like this. Here now you are getting T5R. Here what you are getting is a T4R2. In various intermediate stages they are being observed. Here you are getting T3R3. Here you are getting a T2R4. Here you are getting a T1R5, and here you are getting a R6. But according to concerted model, either the enzyme is in T6 state, and once substrate bind, it directly move to an R6 stage. So there are only
two stages. Once it interact with a substrate, all the subunits which are in tense state, they move to a relaxed state. This is called as concerted model. So to explain cooperativity, two different models they have been proposed. Coming to a very important concept that is referred to as allosteric constant. अब हमने पढ़ लिया है कि what we mean by relax and what we mean by tense state. तो allosteric constant is basically the ratio of a tense state by relaxed state. जो tense state by relax state के रेशियो को हम लिंकिंग नंबर कहते हैं. So allosteric constant is basically a kind of equilibrium constant, and obviously जो भी पॉजिटिव रेगुलेटर है, so allosteric constant is T0 by R0. जो भी पॉजिटिव रेगुलेटर्स होंगे वह एलोस्टेरिक कांस्टेंट को कम करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रेगुलेटर्स व्हाट दे इंक्रीज द प्रमोट द T0 स्टेट, और सॉरी R0 स्टेट को प्रमोट करते हैं और T0 स्टेट को कम करते हैं. पॉजिटिव रेगुलेटर्स दे विल फेवर अ रिलैक्स स्टेट, जबकि जितने भी नेगेटिव रेगुलेटर्स होंगे वह क्या करेंगे, रिलैक्स स्टेट को कम करेंगे और टेंस स्टेट को बढ़ाएंगे. And here the ratio T0 by R0 will increase. So we can say that negative regulators हैं वह allosteric constant को increase करते हैं, जबकि positive regulators हैं वह सब allosteric constant को कम करते हैं. Then graphically भी यहां पर represent किया गया है कि अगर ये suppose normal curve है, अगर कोई एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो आप देखेंगे कि अब कर्व है वह लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया. लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने पर अब जो भी K 0.5 की वैल्यू है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, यानी एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बढ़ गई. जबकि जो भी नेगेटिव रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है वह कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो कंपैरेटिवली और कम हो जाएगी. इसको Km की जगह पर यहां पर हम टर्म इस्तेमाल क्या करें, K 0.5. हालांकि मतलब एक ही है कि K 0.5 इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेयर द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ Vmax. So positive regulators they somehow help the enzyme. Negative regulators they negatively influence या affect the enzyme activity. As an example we can take a case of aspartate transcarbamylase holoenzyme. जो एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज होलोएंजाइम है वह दो कैटालिटिक सबयूनिट का बना हुआ है और उसमें 3 रेगुलेटरी सबयूनिट. एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस की रेगुलेटरी स्टेप का इंपॉर्टेंट एंजाइम है. 2 कैटालिटिक सबयूनिट और 3 रेगुलेटरी सबयूनिट. और आप देखेंगे हर कैटालिटिक सबयूनिट 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है. इसके अंदर टोटल देयर आर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. While 3 regulatory subunits, each of is composed of 2 polypeptide chain, means again there are 6 polypeptide chains. So we can say that in aspartate transcarbamylase there are 6 polypeptides which are making a catalytic subunits, and then there are 6 polypeptides which are making a regulatory subunit.
देन डिपेंडिंग अपॉन कि इसके ऊपर एलोस्टिक एंजाइम के ऊपर मॉड्यूलेटर्स या रेगुलेटर्स किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एंजाइम्स को, एलोस्टिक एंजाइम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इट कुड बी के सीरीज ऑफ एंजाइम विच इज रिजेंबल लाइक कॉम्पिटिटिव इन अ सेंस कि यहां पर जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है वह केएम को अफेक्ट करेगी. एंड अनदर इज अ वी सीरीज ऑफ एंजाइम्स जहां पर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल वी मैक्स को बढ़ाएंगे या वी मैक्स को कम करेंगे, यानी दे विल रिजेंबल मोर लाइक अ नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप. सो के सीरीज में जो एंजाइम्स हैं उनमें एलोस्टिक मॉड्यूलेटर्स सबस्ट्रेट की एफिनिटी को चेंज करते हैं. सबस्ट्रेट की एफिनिटी के लिए यहां पर टर्म के एम की बजाय व्हाट वी आर यूजिंग टर्म K.5. So K.5 is a dissociation constant for a allosteric enzyme. So जो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं वह कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे ताकि नेगेटिव modulators, in other words you can say inhibitors, they increases K.5, thus decreases K.5, thus they decreases affinity of enzyme for substrate. Then positive modulators also referred to as activators, वह क्या करते हैं, कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. दे डिक्रीजेस K.5 and thus increases affinity of enzyme for substrate. इस तरीके के एग्जाम्पल जो के सीरीज ऑफ एंजाइम्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, another example could be taken as ATCase, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज. उसमें आप देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेटर है एटीपी, तो उसका नेगेटिव रेगुलेटर है सीटीपी या यूटीपी, मोर एक्यूरेटली. उसी तरीके से another example could be taken as threonine dehydrogenase. So carboyl phosphate synthetase, aspartate transcarbamylase, threonine dehydrogenase, these are some of, you can say, examples of K series of enzymes. Then moving to our second category, that is V series of enzymes. In V series of enzymes, the modulator, it affects the Vmax. For example, if there is some activator, activator क्या कर रहा है, Vmax को increase कर रहा है. If there is some kind of inhibitor, it
decreases the Vmax. The example of such enzymes include fructose 1,6 diphosphatase. So fructose 1,6 diphosphatase के अंदर AMP इस एंजाइम की Vmax को कम कर देता है. तो अनदर एग्जांपल इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए Vmax को इंक्रीज कर देता है. ओके, सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज या डाइफॉस्फेटेज, कुछ भी आप टर्म इस्तेमाल कर सकते, यू कैन इवन राइट अ बिसफॉस्फेटेज. जहां पर जो एएमपी है वह इनहिबिट कर रही है. तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वह एक्टिवेट करने का काम करता है. सो दिस इज about allosteric enzymes. That is, they are composed of multiple subunits. They obey Hill's equation. They show a cooperativity. They are pacemaker of enzymes, metabolic pathways. They play an important role at all rate limiting and committed steps. They are most often composed of multiple subunits, which are divided into two types: catalytic and regulatory. कैटालिटिक साइट हैज आइसोस्टेरिक और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, क्योंकि जो रेगुलेटरी सबनेट है उसके ऊपर रेगुलेटर बाइंड होने की साइट होती है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं. नाउ आइसोएंजाइम्स. आइसोएंजाइम्स or simply referred to as isozymes. These are the enzymes which catalyze a same reaction but has a different amino acid sequence. So let's say there is some reaction, glucose to glucose 6 phosphate. Another substrate over here could be ATP and product is ADP. You will find that in majority of tissue this reaction is carried by an enzyme hexokinase, but the same reaction in liver could be played by glucokinase. So hexokinase, glucokinase catalyzing the same reaction. The gene for glucokinase is different. You'll find that it is composed of multiple subunits, and the genes for a hexokinase is totally different. Hexokinase is composed of multiple subunits. It is an allosteric enzyme. But these two enzymes, which differ in amino acid sequence, yes, yet catalyze the same reactions, are referred to as isoenzyme. Or for example, one malate dehydrogenase is in mitochondria and another malate dehydrogenase is working with cytosol. They both are catalyzing a similar reaction, but one in a mitochondria, another in cytosol. It means definitely they cannot be a product of same gene. एक जीन के तो प्रोडक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि एक जीन का प्रोटीन प्रोडक्ट होता तो या तो उसे साइटोसोल में होना चाहिए या माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए. दो अलग अलग डेस्टिनेशन पर है, इसका मतलब देयर आर सम डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, बट द नेम इज सेम. इट मींस दे आर कैटलाइजिंग अ सिमिलर रिएक्शन. सो क्योंकि उनकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही अलग है और अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग है, तो फिर उनका मास भी अलग होगा, उनका चार्ज भी अलग होगा, और मास और चार्ज अलग है तो काइनेटिक पैरामीटर्स लाइक के कैट और के एम भी डिफरेंट होंगे और डिफरेंट तरीके से रेगुलेट हो रहे होंगे.
यानी some enzymes they may have some form of enzymes like hexokinase, they may have a high affinity for glucose. There may be another enzyme like glucokinase that may have a low affinity for a glucose. हेक्सोकाइनेज की के कैट वैल्यू अलग हो सकती है, ग्लूकोकाइनेज की के कैट वैल्यू टोटली डिफरेंट हो सकती है. आइसोएंजाइम्स they are encoded by different genetic locus. So इवोल्यूशन में होता क्या है कि पहले कोई एक कॉमन एंसेस्ट्रल जीन रहा होगा और इवोल्यूशन के दौरान इस जीन का डुप्लीकेशन हो गया, एक कॉपी की बजाय अब हमारे पास सेम जीन की दो कॉपीज बन गई और उनमें से किसी एक कॉपी के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, कुछ चेंज आ गया. मान लें कि कुछ इसमें चेंज आ गया. अब इससे बनने वाला एंजाइम और इससे बनने वाला एंजाइम स्टिल दे मे कैरी आउट आ सेम रिएक्शन. हो सकता है अभी भी ये डुप्लीकेट एंजाइम की तरह काम कर सकते हो, लेकिन इनकी अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज है तो फिर काइनेटिक पैरामीटर्स हैं वह भी वेरी कर सकते हैं. सो isoenzymes they are mainly encoded by different locus, means the gene, there is a gene 1 for a one isoenzyme and there is maybe another gene which is for a second isoenzyme, and these two genes they have evolved from one common gene by the process of duplication. Then there was some minor changes. Best example of isoenzyme could be given is lactate dehydrogenase and another is creatine kinase. Lactate dehydrogenase की you will find there are at least 5 different isoforms in the different organs or tissues, while creatine kinase की there are 3 different isoforms in different tissues. Lactate dehydrogenase, it is a tetramer composed of 4 subunits, while creatine kinase is a dimer which is composed of 2 subunits. So best example of isoenzyme is lactate dehydrogenase and creatine kinase. So creatine kinase कि there are 2 different genes जिनसे creatine kinase produce हो सकता है. One of the gene is referred to as B because it was first it is expressed high in a brain, and another is M which is mainly expressed in a skeletal muscles. तो इसका एक्सप्रेशन होकर B टाइप की सब यूनिट भी बन सकती है और इसका एक्सप्रेशन होकर M टाइप की सब यूनिट भी बन सकती है. So you will get a B type of subunit and a M type of subunit. Get a B type of subunit or M type of subunits. Now, as already mentioned, it is a dimer. So dimer जो creatine kinase का होगा वह BM तरीके का होगा, या to B subunits they will associate, or to M subunit they will associate. That depends upon the gene which is expressed in that particular tissue. For example, in brain mainly B gene is expressed, M gene का एक्सप्रेशन कम होता है, इसलिए ब्रेन के अंदर जो क्रिएटिन काइनेज होता है वह बी टाइप का होता है. उसके कॉन्ट्रास्ट अगर आप स्केलेटल मसल्स में देखें, इफ यू सी इट इज इन स्केलेटल मसल्स, तो वहां पर सिर्फ एम जीन एक्सप्रेस होता है, वहां पर बी जीन एक्सप्रेस नहीं होता. एज अ रिजल्ट
the in skeletal muscles you will find M2 type. In a brain you get B2 type. Beside this, some other organs like the intestine also may have BB type, but cardiac muscles has a creatine kinase MB type. It means these isoenzymes, they could be utilized as a marker of an tissue or organ. For example, if you are getting a creatine kinase type 2, that is a BM type, more in the blood, it simply suggests that there is more damage to heart tissues. And if you are getting more amount of M2 type of creatine kinase, this definitely represents a damage to skeletal muscles. Brain tissue, they have an abundance of creatine kinase 1, that is B2 type. So creatine kinase could be utilized as one of the marker for heart disease. Although lactate dehydrogenase can also be utilized. Although lactate dehydrogenase could also be utilized. But the problem with lactate dehydrogenase is that its same kind of lactate dehydrogenase could be released from various tissues. Although if we talk about lactate dehydrogenase, there are again two genes for lactate dehydrogenase. One is H type and another is M type. And since lactate dehydrogenase is a tetramer, so all 4 subunit could be H4 type, or 3 could be H3, 1 could be M type, or H2, M2 is possible, or even HM3 is possible, or M4 is possible. 5 forms they are possible. So you can find 5 forms. Okay, out of which H4 it is mainly expressed in heart, M4 it mainly expressed in cardiac tissues. But then also this lactate dehydrogenase is often not utilized as a marker, because H4 type of lactate dehydrogenase could also be released from some other sources, which can give a comparatively false information. So this is about the allosteric enzymes. Then moving further, there are some enzymes which are comparatively lesser known, but then also we should study about them, like Ab enzymes or you can take an example of riboenzymes. So now moving to
little bit, having a little bit idea about an enzyme referred to as Ab enzyme, and you can put a little bit information, you can note down a little bit information about Ab enzymes. That is, first, these Ab enzymes, they are protein, or we can say in one line, these are catalytic antibody. These are catalytic antibody. In other words, the nature of them is also protein. These Ab enzymes, they has been experimentally produced as a substitute for non-functional enzymes. The hypothesis was completely very simple and straightforward, that if an enzyme, it interact with the substrate and can convert it into a product, then why not an antibody which has been raised against a using substrate as an antigen. Let's say this is some kind of antibody which has been raised against the substrate. The substrate was utilized as an antigen. For example, there is some kind of substrate, उस substrate को हमने rat में इंजेक्ट किया ताकि substrate के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी मिले. तो जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये एंटीबॉडी भी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज इट हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट. सेम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस दे आर इन्वॉल्व्ड, and if same non-covalent interactions they are involved, then this substrate should also be converted to a product. और अगर ऐसा होने लगे तो ऐसी एंटीबॉडी को हम कैटालिटिक एंटीबॉडी कहेंगे. So experimentally trials were being made to produce such kind of experimental antibodies named as Ab enzymes. These antibodies जिन्हें हम Ab enzyme कह रहे हैं, these catalytic antibodies were raised using substrate transition state analog as एंटीजन. यानी पहले कोशिश की गई कि नॉर्मल सबस्ट्रेट को रेट में इंजेक्ट किया जाए. सपोज दिस इज अ normal substrate which was injected in a rat. Obviously substrate molecule they are very small, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरली रेज नहीं होती, पर आगे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट को किसी कैरियर प्रोटीन के साथ, किसी कैरियर के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो अब सबस्ट्रेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जा सकती है. सबस्ट्रेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी भी, वह एंटीबॉडी सबस्ट्रेट को पहचान भी रही थी, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था. जब एंटीजन सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है तो प्रोडक्ट बनता है, एंटीबॉडी सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. प्रॉब्लम क्या थी? तो बाद में पता चला कि एंजाइम सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट में नहीं पहचानता,
बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में जब पहचानता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रॉब्लम ये कि हम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड। तो कोई ऐसा केमिकल आइडेंटिफाई किया जाए जो अपनी ग्राउंड स्टेट में सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट से रिजेंबल करता, यानी जिस मॉलिक्यूल को हम यूज कर रहे हैं उसकी खुद की तो ग्राउंड स्टेट है, बट उसकी ग्राउंड स्टेट सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट से रिजेंबल करती हो, तो उसको हम कहेंगे एन एनालॉग विच रिजेंबल्स लाइक। सो वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल विच इज रिजेंबलिंग लाइक द सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट। अब जो एंटीबॉडीज रेज हुई थी, दीज एंटीबॉडीज वर अगेंस्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। Then these antibodies successfully they have been produced, but later on इसके ऊपर अब काम नहीं किया था, क्योंकि पहली बात ये एंटीबॉडीज जो रैट ओरिजिन से हमने ऑप्टेन की ह्यूमन में इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटीजन की तरह काम करेगा, हमारे लिए काम नहीं करेगी। प्लस इन विवो सिस्टम में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो बहुत लो अमाउंट में होती है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि एक अल्टरनेटिव अप्रोच अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर ह्यूमन का कोई एंजाइम मिसिंग है तो एंटीबॉडी को क्यों यूज किया जाए, उस जीन को ईस्ट के अंदर या एनिमल सेल लाइंस के अंदर या प्लांट सेल लाइंस में इंट्रोड्यूस किया जाए, जीन का ज्यादा एक्सप्रेशन कराया जाए, ज्यादा एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम क्योंकि ह्यूमन ओरिजिन वाला है इसलिए किसी तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर अब हमें एंजाइम बनाना भी होता है किसी हेट्रोलोगस, तो वी विल यूज हेट्रोलोगस सिस्टम में वी यूज एन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ताकि कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। सो दिस वाज ओवरव्यू अबाउट एब एंजाइम्स। सिमिलरली we can have a little bit idea about allo enzymes. एलो एंजाइम्स, एलोस्टिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं एलो एंजाइम्स के बारे में। एलो एंजाइम्स आर enzymes which are produced from different alleles of same gene, or we can say they are referred to as, they could be referred to as electrophoretic variant of same enzyme। और क्योंकि वह सेम एंजाइम ही है इसलिए they have will have may have same km kcat location where they are functioning। Only the difference is that they are produced from different alleles, because we know that humans they are diploid, and diploid means हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज है, चाहे फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें चाहे सेकंड क्रोमोसोम की बात करें, देयर आर टू कॉपीज। one copy has been taken from, let's say, father side, and another copy it has been taken from, let's say, mother side। एक फादर से हमारे पास क्रोमोसोम की कॉपी आ रही है और एक हमारे पास मदर से कॉपी आ रही है। सो ऑल हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स। अगर हेक्सोकाइनेज का जीन इस क्रोमोसोम पर मदर साइड से आया तो हेक्सोकाइनेज का जीन यहां पर फादर साइड से आया तो हेक्सोकाइनेज का जीन मदर साइड से भी आएगा। पर जो मदर से जीन है और जो फादर साइड से जीन है, if you look at these genes which are being obtained from a mother side and a father side,
father side, this is from mother side. What you will find is that there are minor differences. There may be one or two nucleotide change due to the some kind of mutation, ड्यू टू विच इससे बनने वाला जो एंजाइम है और इससे बनने वाले एंजाइम में कुछ माइनर डिफरेंस हो सकता है, एक अमीनो एसिड का भी डिफरेंस हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर दे विल फॉर्म अ सेपरेट बैंड, दे विल फॉर्म अ सेपरेट बैंड। इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। हो सकता है एक अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से उनकी एक्टिव साइट में कोई चेंज न आया हो, जिसकी वजह से दे आर हैविंग अ सेम के कैट और दे विल हैव अ सेम के एम। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उनकी के कैट के एम सेम ही रहे, माइनर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे कि वहां पर नॉर्मल एलील से बनने वाला एंजाइम फंक्शन सही ढंग से करता है, जबकि जो म्यूटेंट फॉर्म है उससे एंजाइम काम नहीं करता। बट दिस फंक्शनल एंजाइम एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम्स दे वुड आल्सो बी रेफर्ड टू एज एन एलो एंजाइम्स। So alloenzymes, these are electrophoretic variant of same enzymes. They are encoded by different alleles of same genes. Even we will say that the same enzymes but present in a different species, they would be referred to as alloenzymes. Then having a little bit idea about riboenzymes, थोड़ा सा अगर हम riboenzymes के बारे में बात करें, अब तक हम जितने भी एंजाइम्स की बात कर रहे थे, दे ऑल वर proteinaceous in nature, whether it is a Michaelis-Menten enzyme, allosteric enzyme, isoenzyme, Ab enzyme, or alloenzyme, all are proteinaceous in nature. But when RNA act as enzyme, it is referred to as riboenzymes. Riboenzymes simply they are catalytic RNA. These riboenzymes, these are ancestral enzymes, means first enzymes to evolve. ओल्ड वर्ल्ड वाज एन आरएनए वर्ल्ड, सारे काम आरएनए करता था, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना हो, चाहे वो एंजाइम की तरह काम करना हो, रेगुलेशन का काम करना हो, ऑल द फंक्शंस वर बीइंग परफॉर्म्ड बाय आरएनए। These riboenzymes or catalytic RNA they basically are slow enzymes and show a low stereospecificity, low, you can say, substrate specificity and stereospecificity. That's why gradually replaced by proteinaceous enzymes during evolution. राइबोएंजाइम्स फास्ट एंजाइम नहीं थे, स्लो एंजाइम थे उन, और स्लो एंजाइम का मतलब है हमारा दे वर हैविंग अ लो के कैट, टर्नओवर नंबर उनका कम था, इवन पर मिनट में हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए
इवोल्यूशन में जैसे जैसे प्रोटीनेशियस एंजाइम इवोल्व होते गए, ज्यादातर राइबो एंजाइम्स वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल होते गए, उनके अगेंस्ट सिलेक्शन होना शुरू हुआ। पर आज भी कई जगह रिएक्शंस के लिए जहां प्रोटीनेशियस एंजाइम इवोल्व नहीं हुए, वहां पर राइबो एंजाइम्स काम कर रहे हैं। मेनली राइबो एंजाइम्स व्हाट विल फाइंड इज दैट दे कैरी आउट अ न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटीज। ज्यादातर जगहों पर वो क्या करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी क्यों करेंगे, दैट इज ड्यू टू अ फ्री 2' OH ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर। क्योंकि डीएनए जनरली कैटलिस्ट का काम नहीं करते, जबकि आरएनए करता है। तो फर्क क्या है डीएनए और आरएनए में, तो यू विल फाइंड दैट इट्स अ डिफरेंस इज इन अ राइबोज शुगर एट इट्स 2' OH। सो राइबोज शुगर की जो 2' OH ग्रुप है, बाकी ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यहां पर कोई बेस होगा। ओनली द फ्री ग्रुप इज द 2' OH ग्रुप, जो इस स्टेट से इस स्टेट में आ सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी शो कर सकता है। यहां पर O- आ सकता है। Otherwise, this is connected to base, this is connected to phosphodiester bond, this is also connected to phosphodiester bond. So this can now behave as a nucleophile. Mainly these riboenzymes, they were involved in, or they attack at phosphorus, they attack at phosphorus and carbon center, mainly phosphorus और carbon center के ऊपर अटैक करते हैं। That is leads to a lysis and formation of bonds, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। So this is the important points about riboenzymes. We can take some examples where still the riboenzymes or catalytic RNA, they are performing their task. That is, RNA has its own primary structure, 5' to 3'. These are the bases. Instead of R chain, these are nitrogenous bases. Then the same RNA could adopt as, जैसे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, इस तरीके से सेम RNA could adopt as some kind of, you can say, secondary structure. This could be a secondary structure of RNA. Still various R chain, they are exposed. Hydrophobic interactions, they will come into play, and now these various secondary structure, they may fold over each other like a protein, and then the same RNA could also adopt a tertiary structure. So instead of R chain, here most of time what you will find is there are exposed OH group of ribose sugars and various nitrogenous bases, which would be playing an important role. So there is primary structure, then there will be secondary structure, and there will be tertiary structure even in RNA. So they can also act as an enzyme. Some of the examples जहां पर RNA आज भी कैटलिस्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, these include ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले चैक अल्टमान ने की थी। दे वर आइडेंटिफाइड इन अ प्री आरआरएनए, और प्री आरआरएनए के अंदर देयर वाज सम इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। So this is, let's say, pre-rRNA having some intervening sequence. So this is 6.4 kb ट्रांसक्रिप्ट, जिसके अंदर लगभग 414 न्यूक्लियोटाइड का कोई इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। और आप देखेंगे आगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस करेंगे तब कि अगर एक को फैक्टर दे दिया जाए, को फैक्टर प्रोवाइड कर दिया जाए, लेट्स से जीएमपी और एनी काइंड ऑफ जीएमपी, जीडीपी या जीटीपी और इवन ग्वानोसिन में से किसी भी तरीके का को फैक्टर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये खुद एंजाइम की तरह काम करता है। इंट्रॉन इटसेल्फ एक्ट एज एन एंजाइम।
That is, you will get the for two products, they would be linked, and the intron would be released in a linear form with a one extra guanosine nucleotide at 5 प्राइम एंड. जो एक्स्ट्रा गुआनोसिन है वो भी यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा. दिस इज द 3 प्राइम. सो लीनियर introns could be seen, excised out. That was the first example of group 1 intron, which was seen in pre-rRNA genes. 6.4 kb में से कोई 414 न्यूक्लियोटाइड का इंट्रॉन वहां से हट रहा था. तो another example what you can take is group 2 introns. Group 2 introns, they were seen in various pre-mRNA transcripts, especially in mitochondria and some archaea bacteria. ग्रुप 1 इंट्रॉन की जो चेक और अल्टमान ने डिस्कवरी की थी वो भी आप लिख सकते हैं. दैट वाज आइडेंटिफाइड इन अ सीलिएटेड प्रोटोजोआ, दैट इज टेट्राहाइमेना थर्मोफिलस. जहां से पता चला कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम कर ही सकता है, उसके साथ साथ इवन इट कुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सो आरएनए ओल्ड वर्ल्ड हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम थी कि जब प्रोटीन नहीं था तो कैटलिसिस किसने की. तो चेक और अल्टमान ने बताया कि नहीं, हमें प्रोटीन एंजाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आरएनए खुद कैटलिस्ट का काम कर सकता है. ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, दे वर आइडेंटिफाइड इन प्री एमआरएनए इंट्रॉन्स. सो यहां पर कुछ इस तरीके की इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होती है. Introns often start with a GU, then there is a, in branch point there is some adenosine sequence, then there is some AG sequence, and this is, let's say, a pre-mRNA. This portion is intron. This is exon, you can say 1, this is exon 2. And here there is no need of cofactor from outside. Directly intron itself act as एंजाइम. इंट्रॉन खुद एंजाइम का काम करता है. सो दैट एक्सॉन 1 गेट लाइगेट टू एन एक्सॉन 2. एंड द इंट्रॉन इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ लैरिएट. इस तरीके के स्ट्रक्चर में इंट्रॉन है वह रिलीज होता है. सो दिस इज इंट्रॉन इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर. रिएक्शन is initiated. Here you can also wrote down, reaction is initiated by 2' OH group of adenosine of branch point. That you will study more detail when you will study molecular biology, but this region is referred to as branch point. और branch point का adenosine यहाँ पर रिएक्शन में को इनिशिएट करने का काम करता है. जबकि ग्रुप 1 इंट्रॉन में इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा था? बाहर से आया हुआ एक कोई ग्वानोसिन या जीएमपी, जीडीपी या जीटीपी जो कोफैक्टर की तरह काम करता है. सो दिस इज अबाउट ग्रुप 2 इंट्रॉन्स. सो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स and group 2 introns, they are best example of riboenzymes which you can find working at multiple places. Some other examples include peptidyl transferase, that is also riboenzyme. riboenzyme continued पढ़ रहे हम. riboenzyme में और कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें तो it could be peptidyl transferase. Peptidyl transferase, what it do is it transfer
peptide chain from P site to A site. It is transferring a peptide chain from P site to A site. So let's say this is A site of a ribosome. So this site is referred to as P site, this is referred to as E site, and near to this there is a E site. That you will study when translation, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ P साइट पर कोई पैप्टिल चेन है और ये नया इनकमिंग अमीनो एसिड, ये राइबोसोम यहाँ पर बाइंड है। पैप्टिल ट्रांसफरेज का काम क्या है? P साइट से A साइट पर पैप्टाइड चेन को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करना। ओके, and the role of this is played by 23S rRNA of large subunit in prokaryotes, which is acting as a peptidyl transferase, means RNA है वह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम राइबोएंजाइम कहेंगे। So the role of peptidyl transferase is performed by 23S rRNA, which is present in the large subunit. Another example which we can take is ribonuclease P, which are involved in processing of pre-tRNA to tRNA, उस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो शॉर्ट में RNase P भी लिख सकते हैं, ये भी एक कैटालिटिक RNA। What it actually do is, let's say this is some kind of pre-tRNA which is having a some kind of 5' overhang। कई तरीके के प्रोसेसिंग इवेंट होते हैं, but one of the processing event what is needed is one of the event which is needed is one of the event which is needed is removal of this overhang 5', इस overhang 5' को हट remove करना, this is one of the event, so that you can produce this kind of tRNA, इस तरीके का tRNA बनाया जा सके, प्री tRNA को tRNA में कन्वर्ट कराया जा सके। Okay, so this is to be removed and this is removed by RNase P। RNase P इसको हटाने का काम करता है, which is a riboenzyme। So dear friends, these are the different types of enzyme। So आज की क्लास हम इतनी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम्स का जो लास्ट हिस्सा हमारे पास पीछे बचा हुआ है, दैट इज व्हाट आर द रेगुलेटरी स्टेजेस, दैट हाउ एंजाइम्स दे आर रेगुलेटेड, व्हाट आर कैटालिटिक मैकेनिज्म्स, और उसके साथ साथ एंजाइम प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते रहें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वंस अगेन।